So here you can see students organizations, around 12 organizations are here, students protesting, raising their voice against the fee hike by Savitribai Phule Pune University. Yeah, your name and what would you like to say? The reason for your agitation? यहाँ पर हमने 11 जुलाई को पहला एक प्रोटेस्ट किया था फी हाइक के इसके बारे में, तो उसको 3 महीने हो गए लेकिन उन्होंने कोई यहाँ पर कुछ भी डिसीजन नहीं लिया। इसलिए हम आज फिर से फी हाइक जो हुई है तो उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। फी कितनी बढ़ाई गई है जिसके ऊपर ये आप नाराज हो? जैसे कॉमर्स की फीस पहले 8,000 थी तो वो अभी 15,000 की है, और साइंस की जो फीस थी 12,000 वो 37,000 की है। ऐसी फी हाइक हुई है यहाँ पर, और जो एग्जाम फी थी 190 थी तो वो 1,050 की है। Your name and how are you connected with Pune University? Hello, my name is Purnima. I'm a PhD student. I'm studying history over here. अभी ये जो मैं बैकग्राउंड देती हूँ प्रोटेस्ट का, ये जो प्रोटेस्ट है ये जुलाई से पहले एक्चुअली शुरू हुआ था। हम बहुत चक्कर लगा रहे थे वीसी प्रो वीसी रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और फिर जब हमको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला बिकॉज फी हाइक्स बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए थे 2019 के सर्कुलर के बेस। और कीपिंग इन माइंड कि कोविड की सिचुएशन पूरे इकोनॉमी कोलैप्स हुई है, तो कीपिंग इन लाइट कि ऐसा सिचुएशन हुआ वी सी कि अभी भी फी हाइक ड्रास्टिकली इंक्रीज हुई है। तो हमने 3 दिनों के लिए आंदोलन किया और फिर हमको एक रिटन अश्योरेंस लेटर मिला और उन्होंने बताया कि एवरी 10-15 डेज विल हैव अ कन्वर्सेशन विद यू टू सॉल्व द इश्यूज। अभी तक किसी ने हमको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया, एंड द प्रॉब्लम इज कि हमको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर दर्शाया गया है। So here with us we have some more students. Let's ask them what they have to say. If you compare private universities fees, that's what the faculty members are saying, that we have to compare fees which are existing or which are being charged by other colleges, private colleges. To remind these such faculty members that if you get this some sort of an economist who can try and come and study, if they lack the decency to appoint such a person and who can come and study the kind of rise and the kind of hike that we are facing, right, which we are unable to pay. I mean, they need to be reminded that already we are as part of taxes, direct, indirect and all sort of tax, GST, we are already paying आपका 489 करोड़ का बजट कोई ऐसे नहीं बनता है, वो आपके मेरे पैसे टैक्स से बनता है। तो ये बोलना कि सिम्बोसिस में फीस इतना है, उसमें फीस इतना है, पुम्बा में फीस इतना है, ठीक है, तो आपके यूनिवर्सिटी, आपके देश में ऐसा भी एक यूनिवर्सिटी है जो यूनिवर्सिटी है ही नहीं बट स्टिल इट हैज गॉट एन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस टैग। ओके, सो ये जो एलिगेशन है ना कि आप इनसे कंपेयर कर लीजिए, उनसे कंपेयर कर लीजिए, इट स्टैंड्स नो ग्राउंड। What is the fee that has been hiked, if we have to say, because they are also claiming that this fee hike was passed in 2011, now it's being implemented. अगर 2000 चाहिए, it has been अगर पॉइंट ऑफ डिपार्चर यही पकड़ ले कि 2011 में अगर इम्प्लीमेंट हुआ है, to answer your first question, the kind of rise that they have brought in, it is around 233%. Arbitrary and exponential. It is an anti-student, anti-people, anti-labor. Every sort of it is an anti-people rise as we see it. But they are claiming the fee that is being hiked is around 15 to 25%. You are saying 233% fee has been hiked. So what is indicative here is the kind of meeting that we had yesterday with the Vice Chancellor, right? Where some of the members of we people went there and we had a word with him. And there was a complete sort of confusion in the meeting as to what kind of fee hike has been there, right? So we've got a menu card, right? आप होटल में खाना खाने जाते हो, आप मेन्यू कार्ड देखते हो ना, आप बजट के हिसाब से आप डिश मंगाओगे। We got a menu card of the kind of rise that we are facing here, right? If you just check out the exam fees, which is 190 to 1050, right? Arts it is 134%, commerce it is 189%, right? हम तो सिम्बोसिस में नहीं पढ़ रहे ना सर, सिम्बोसिस में पढ़ रहे हैं हम, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन है ये तो। 189% हम कोई सिम्बोसिस में पढ़ रहे हैं, इस रोड पर नहीं बोलेंगे इस पर। How many students will be affected?
The university caters to the needs of, if I'm not wrong, around 4,500 students, and to act colleges. There are more than 600 affiliated colleges to the university, spread across 3 cities, that is Ahmednagar, Pune, and Nasik. So this will be implemented in all other colleges as well. We have been of this constant demand कि आपका affiliated college or university department का fees should be at par, it should be the same. Same is for the PhD research department in the university as well as research institutes affiliated to the university. But if you check out, I'll tell you a figure here, 6,000 rupees is for a grantable course for MA. Okay, but the college from where I have graduated, the same course is offered at 16,500. How long will your agitation continue? जब तक demand पूरा नहीं होता है, we'll carry on. The movement is indicative. Given the meeting that we had yesterday, it is going to intensify. So here you have heard that the students are not ready to listen. They are adamant that their voices should be heard, and the fee hike that has been implemented should be taken back by the faculty members, by the management of Savitribai Phule Pune University. With cameraman Gopal Harnejis, Pankaj Khelkar in Pune for India Today.